We'll be looking at another kind of comparison. We are going to compare public and private administration. We look at the differences and similarities between public and private administration. But before that, let us look at what we did during the last lecture. A small summary or a recap of the discussions during the last lecture. We talked about development administration. We talked about its emergence. And we found that the concept and discipline of development administration had emerged after Second World War, when a lot of reconstruction was taking place, new international agencies were coming up, and the United States, with its agency, USAID, was very active in trying to reconstruct in different parts of the world. In fact, it was felt that perhaps the Western model of development administration should be made relevant and applicable to the newly developed countries in Africa, Asia, and South America to ensure growth and speedy development. Now we looked at the definitions of development administration at length during the last lesson. And one of the interesting definitions was that it was basically engineering social change. And social change was an all-encompassing concept which included politics, society, and of course economic growth. But more emphasis in other definitions is found on sustainable economic growth and development. We also looked at the characteristics of development approach, and we found out that goal orientation was essential. As compared to traditional administration, goal orientation was supreme. We had to have certain goals as the end objective of certain programs, and those had to be met. And those has to be met in a particular time frame. So this temporal aspect of development administration became very important. You got to do things within a certain time, within a targeted time or period, so that development can be speedy. And in order to implement such development, you needed innovative administration. You needed a responsive administration who would adhere to the goals and was capable of delivering outputs the way they were required. However, we must understand that the approach in development administration has to be an inclusive one and a distributive one. In other words, the fruits of development should be shared, if not equally, at least to a greater extent, by everyone, all the strata of the society, all the sections of the society. And as such, all the policies being put into place, all the programs being carried out, should have that distributive and inclusive approach built into them. So what we saw was that development administration brought about the trend that let us move from a production-centered approach towards a people-centered approach, where the benefits of development are going to the people, to the populace at large. This was extremely important component of development administration. So when we look at development administration versus the traditional mode of administration, we find that certain characteristics which were present to a lesser extent maybe in the traditional administration became very much focused
in development administration, and we talked about them. The bureaucrats, the administrators, the people who are running the show had to be, in all agencies of the government, had to be more responsive, more innovative, more change welcoming, because development means change. And if the bureaucracy remains status quo oriented, does not welcome change, does not implement change, then development can't take place. So we would need a different breed of administrators to carry out development administration, or at least such administrators who have changed their mindset from the status quo mindset to that of change orientation and goal orientation, and have become responsive to the needs of the people. Now we look at differences between public and private administration. According to one authority, Appleby, the differences are that they revolve around the political character of public administration vis-a-vis a political character of the private administration. Also, private administration is limited because it might be concerned with a small organization, maybe even a large organization, but the breadth and scope of what that organization does cannot compete with, or cannot parallel, or cannot be compared with the breadth of scope of activities of the government, and their impact also, and all the considerations that go into making policies to meet certain objectives. So the breadth of scope and the impact that decisions of the managers in the public sector have is very much different from that in the private sector. The policies and the decision making of public managers would be affecting millions of people probably, whereas in the private sector, whatever decisions are taken would primarily be affecting a much smaller populace, probably the clients of that organization, which would be a limited number, not in millions. And of course, the considerations would be fairly different. In the public sector, you would be looking at things like equity, you would be looking at things like uniformity, you would be looking at things like distribution, distributive justice, you would be looking at the reaction to any policy when implemented by the people at large, whereas in the private sector, primarily it would be profit dependent. The private organizations generally behave in a manner so that they can maximize their profits, and they are in no way trying to help anyone or subsidize anyone as far as their business goes. Another very important difference is that of public accountability. Private organizations hardly have any public accountability. Once in a while, when some big accident might occur, like maybe a spill in the ocean by a tanker, or some major accident or fire in an industrial house or an industrial unit, there might be talk of public accountability. But public sector is supposed to be accountable all the time to the public. And we see that the public reacts in many ways. And there are many aspects of accountability and many instruments of accountability, many agencies of accountability, which we shall be talking about in due course. Josiah Stamp, another authority on the subject, pointed out 4 differences based on principles
Number one, the principle of uniformity, which means that all decisions taken in the public sector have to apply uniformly to everyone. You can't have a set of rules for the rich. You can't have another set of rules for the poor. You can't have another set of rules for the people whom you like, and another set of rules for people whom you do not like, or a set of rules for the businesses which you want promoted, and another set of rules for other businesses whose owners you don't like. So this principle of uniformity is extremely important and embedded in the concept of public administration. The principle of external financial control. It's not just that the organization, the public sector organization, is going to control its finances itself only. It should, it does. There are mechanisms in any organization to ensure that money is well spent and value for money is managed. But in the public sector, there are a number of external financial agencies which control and oversee the kind of expenditure that is being done by a public sector organization. We talk about audit. There is a whole setup pertaining to audit in all governments, in all states, in all countries. And the Auditor General of a country is a very, very powerful person who's supposed to be the custodian of all the accounts and the spending, the manner of spending by the public agencies. So there is control over public agencies by the financial agencies of the country, which could include the finance division and the audit setup, to ensure that money is being spent properly and wastage or fraud is not taking place. Of course, theoretically we are speaking at the moment. Then there is the principle of public responsibility. Now here politics again comes in. Since the politician who controls the bureaucrat or the public administrator is an elected person, elected by his constituency, his or her constituency, the principle of public responsibility is paramount. In fact, in cases where there is a big fallout from some issues or some untoward step taken by the government, public anger, public reaction is there, and the bureaucrats are held responsible by the political and elected representatives for any wrong decision which might have been taken at that level. And then there is the principle of service motive. In other words, आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है, अवाम को आपने सर्विस देनी है, आपने अवाम को यूनिफॉर्मली ट्रीट करना है, आपके ऊपर एक्सटर्नल कंट्रोल है जहां तक खर्चे का तल्लक है ताकि आप सही तरीके से खर्चा करें, और अवाम को आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है जो कि बिल्कुल प्रॉफिट बेसिस पर नहीं होंगी जैसे कि प्राइवेट सेक्टर में होता है. ये सर्विसेज आमतौर पे सब्सिडाइज भी हो सकती हैं. तो जोसिया स्टैम ने ये 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं कि ये प्रिंसिपल्स जो हैं प्राइवेट सेक्टर में नहीं पाए जाते, सिर्फ पब्लिक सेक्टर में पाए जाते. प्राइवेट सेक्टर
सर्विस देगा जहां उसे पैसे मिलेंगे, तो वो सर्विस मोटिव नहीं है, वो प्रॉफिट मेकिंग मोटिव ही है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव ही है। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको हर एक को सर्विस प्रोवाइड करनी है, आपने हर एक को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, आपकी डेवलपमेंट जो है उसके फ्रूट्स जो है, उसका फायदा जो है तमाम तबकात को जाना चाहिए। तो ये सर्विस मोटिव का कॉन्सेप्ट जो है खासा इंपॉर्टेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और ये बिल्कुल एब्सेंट है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। कुछ और डिफरेंसेस हर्बर्ट साइमन ने हाईलाइट किए। वो कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ब्यूरोक्रेटिक whereas private administration is business like। ये तो बिल्कुल सीधी सामनी बात है कि पब्लिक सेक्टर में हम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बना देते हैं, शायद जरूरत भी होती है और कहीं जरूरत नहीं भी होती, फिर उनमें इतने लोग भर्ती कर लेते हैं, तो एक ब्यूरोक्रेसी जिसका आजकल एक नेगेटिव कॉनोटेशन है वो मारज़ वजूद में आ जाती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में थिनर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मोर फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और वो बिजनेस लाइक ऑपरेशंस करती हैं। फिर हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉलिटिकल वेयरएज प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉन पॉलिटिकल। बात तो सही है कि पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स का बहुत तल्लुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। जब भी कोई जमात बरसर इक़्तिदार आती है तो उसने जो वादे लोगों से किए हुए हैं इलेक्शन के दौरान, उसके हिसाब से पॉलिसीज बनाती है, और वो पॉलिटिकल कंटेंट होता है। एक जमात की मुख्तलिफ पॉलिसीज होती हैं, दूसरी जमात आती है उसकी मुख्तलिफ पॉलिसीज होती हैं। लेकिन जहां तक प्राइवेट सेक्टर का तल्लुक है वो नॉन पॉलिटिकल है, उसको कोई गर्ज नहीं कि इन पावर कौन सी जमात है, उसने तो पैसे बनाने, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करनी है उसने, तो वहां पर पॉलिटिकल कंटेंट या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। शायद कुछ केसेस में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में प्रेशर होता हो पॉलिटिशियंस का कि जी हमें किसी तरीके से ऑब्लाइज कर दें, लेकिन वो एज ए मैटर ऑफ रूल नहीं है, एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो प्रिंसिपल यही है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कंटेंट जो है वो पॉलिटिकल है, और जो भी पॉलिटिकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके मुताबिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चलेगी, और उसमें कई दफा अनजस्टिफाइड इंटरफेरेंस भी पॉलिटिशियंस का होता है एज फार एज पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आर कंसर्न्ड। They may be the ministries, they may be the district administration or the police or smaller organizations at the Thana or the Union Council level. तो definitely ये एक बहुत बड़ा difference है। फिर public administration is marred by red tape, whereas private administration is free from it. किसी हद तक सही होगा, लेकिन कई जगहों पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कई मुल्कों में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, सिंगापुर में भी बहुत एफिशिएंट समझी जाती है, और कई दफा तो ये कहा जाता है कि इन मुल्कों की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो शायद प्राइवेट सेक्टर से भी ज्यादा एफिशिएंट है, और इतनी रेड टेप नहीं है। रेड टेप का मतलब ये है कि आपको कोई भी काम करना है तो वो कई प्रोसीजर्स में से गुजरेगा, और वो सिंपल नहीं होंगे, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स होंगे, और डिले कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली होती जाएगी। ब्यूरोक्रेट जो बैठा हुआ है या एडमिनिस्ट्रेटर जो बैठा हुआ, वो अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली उसको डिले कर रहा है। कॉन्शियसली माइट बी फॉर अदर मोटिव्स, बट अनकॉन्शियसली मे बी ड्यू टू द इनर्शिया इन द सिस्टम, कि जी इस काम करने पर इस फाइल के एक टेबल से उस टेबल पर पहुंचने तक
3-4 दिन तो लगना ही है, ये तो हमारा सिस्टम है. So this red tape is definitely present in most bureaucracies, not just in Pakistan, but most bureaucracies in the world you will find this. और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज फ्री फ्रॉम इट, नो डाउट अबाउट इट. क्योंकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को तो काम जल्दी करना है, पैसे जल्दी बनाने हैं, सर्विसेज फौरन प्रोवाइड करनी है, और अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें प्रोडक्टिविटी का लेवल बहुत हाई लेकर जाना है, क्वालिटी एश्योरेंस देनी है. तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, दे इनहिबिट रेड टेप इन द प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट अफोर्ड रेड टेप. If it does, it loses time and its profits go down. And no state, no chief executive of a multinational corporation or of any other organization, business organization, would tolerate that. Interesting quotation from that great management scientist, Peter Drucker. He says, it is different in its purpose. It has different values. It needs different objectives. And it makes a different contribution to society. जाहिर है, purpose different है. Primary purpose जो है is to serve the people. इसकी values भी different है. Profit maximization नहीं है इसकी value. इसके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होने चाहिए. अगर आपने एक सर्टेन रेट ऑफ ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है तो वो मैक्रो ऑब्जेक्टिव होगा. आम तौर पे जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो छोटे लेवल के नहीं, वो मैक्रो नेशनल लेवल के ऑब्जेक्टिव्स होंगे जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे. सो द ऑब्जेक्टिव्स विल बी डिफरेंट. अगर आपने पॉवर्टी को कम करना है या आपने एक खास इंडस्ट्रियल एस्टेट सेटअप करनी है, एक फ्री इकोनॉमिक जोन सेटअप करना है, तो ये बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं. इस किस्म के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं प्राइवेट सेक्टर में नहीं होते. सो पब्लिक सेक्टर हैज डिफरेंट वैल्यू सिस्टम. इट हैज टू सर्व द पीपल. इट मे हैव टू प्रोवाइड सब्सिडीज फॉर दैट. इट डज नॉट हैव द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज अ वैल्यू, एंड इट मेक्स अ डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी. आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हो प्राइवेट सेक्टर में, मेन आपकी कंट्रीब्यूशन ये है प्राइवेट सेक्टर की. वेयर एज पब्लिक सेक्टर की कंट्रीब्यूशन बिल्कुल डिफरेंट होगी. इट हैज टू प्रोवाइड थिंग्स एट द मैक्रो लेवल. इट हैज टू प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर. इट हैज टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज. इट हैज टू प्रोवाइड सम बेसिक एजुकेशनल सिस्टम. It should invest more and more into education. That should be the value of a public sector. It should invest more and more into the human resource. So, by doing so, the public sector is making a completely different contribution to society when compared to the private sector. And then Drucker goes on to say, performance and results are quite different in a service institution from what they are in a business institution. Again, emphasizing the same thing, that the public sector, primarily public sector agencies and organizations, are service institutions. They are providing services. They are providing health coverage. They are providing welfare. They are providing education. They are providing law and order, stability to the setup. So all these services are being provided in the public sector. Although public sector may rely sometimes on private organizations for part of the delivery of the services, but the primary onus, असल जिम्मेदारी जो है वो पब्लिक सेक्टर की है इस किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए. तो ड्रकर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि सर्विस इंस्टीट्यूशंस जो हैं दे आर प्राइमरीली इन द पब्लिक सेक्टर, और उनकी परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे कंपेयर टू द बिजनेस इंस्टीट्यूशन. बिजनेस इंस्टीट्यूशन अपना परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेगी?
वो अपनी प्रोडक्टिविटी देखेगी, वो अपने आउटपुट की क्वालिटी देखेगी, वो देखेगी उसके ह्यूमन रिसोर्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, टेक्नोलॉजी नई लेकर आए हैं कि नहीं, उसने कितना कंट्रीब्यूट किया है। तो उनके बेंचमार्क्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, वो कितने कंपेटिटिव हैं इज द ओवरऑल बेंचमार्क ऑफ अ बिजनेस इंस्टीट्यूशन। Are products being produced by this business organization selling more from the products of another business organization producing similar kind of products? So you got to be competitive. As such, on one side you are service oriented and on the other side you are competition oriented. And now a comprehensive list of the major differences between the two, public and private sector. Political direction. As I mentioned before, the Prime Minister or the Minister or the Parliament or the committees of the Parliament, be it the lower or the upper house, National Assembly or या Senate in the case of Pakistan, ये पॉलिटिकल डायरेक्शन दे रहे हैं। और जाहिर है इनका पॉलिटिकल कंटेंट, इनका पॉलिटिकल डायरेक्शन जो है इज बेस्ड अपॉन देयर मैनिफेस्टोज ऑफ द पार्टी और द पार्टीज इन पावर, या उनकी नेगोशिएशन बार्गेनिंग के बाद पार्टीज इन पावर के क्या वो पॉलिटिकल डायरेक्शन निकलता है। सो द पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस मूव in the political direction provided by those who have been elected and are in charge of the government. And we already saw कि breadth, scope, impact और consideration जो है huge macro level पर है जहाँ तक public sector का ताल्लुक है, और कोई भी private sector या multinational corporation उस किस्म की complexities से नहीं गुजरती, ना डील कर सकती है जो प्राइवेट सेक्टर में होती है। चाहे उस मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का बजट जो है वो छोटी मोटी मुल्कों से चाहे ज्यादा हो, लेकिन वो जो पब्लिक सेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो सर्विस प्रोविजन है, जो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ आपने इंटरैक्ट करना है, जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड है, ये ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज है। और जो सर्विस प्रोविजन है आपने पॉपुलेस को देनी है कि इसका स्कोप, इम्पैक्ट और कंसिडरेशन का लेवल ही और है जो प्राइवेट सेक्टर में एनविसिड नहीं हो सकता। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की हमने पहले भी बात की। अब पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के कई अदारे हो सकते हैं और कई इनबिल्ट हैं। एक तो आजकल मीडिया बहुत एक्टिव है, आपने देखा होगा, and it is so in most countries that media is very active. Look at India next door, and when we watch their channels, we find that the media is very active when it comes to accountability. So it is not just the agencies of the government which are responsible for public accountability, like NAB in our case, trying to make the organizations accountable on behalf of the public and trying to control corruption. Or for that matter, the committees of the parliament, they are supposed to oversee the working of the public sector and hold them accountable. So there are a lot of committees of the National Assembly, of the Senate, which look after different aspects in different departments. And as I mentioned before, कि media आजकल बहुत बड़ा